Yes, see here. Now I am going to discuss with you the mean deviation about mean when data is group data. Group data means when yesterday we have discussed with you xi or fi. When xi and fi both are given to you, now I am going to discuss with you when class interval and frequency is given to you. And I will discuss two methods with you. One is direct method and second one is shortcut method. Both the methods are good. Try to understand them carefully. See here. I considered example 6 from your book. Example 6. According to example 6, the class intervals provided to you 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 80, 50, 50 to 60, then 60 to 70 and 70 to 80. Then xi. Xi is given to you 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2. We have to find mean deviation about mean using direct approach of calculating mean. See here how we calculate. First of all, find this is frequency, sorry. Now find xi. Xi is, you know, the midpoint of upper limit and lower limit. How will we find? Lower limit plus upper limit upon 2. 10 plus 20, 30. 30 upon 2 is 15. 20 plus 30, 50. 50 upon 2 is 25. Then 35, 45, 55, 65 and 85. 75. Now find fi xi. As you know, the formula of mean is sigma fi xi upon sigma fi. So I need fi xi. So take the product of this. 15 to the 30, 25 is 3 the 75, 8 5 the 40, 8 here 24 or 4 28, then 45 14 ja 14 5 the 70, 14 4 ja 56 or 7 63, 14 5 the 70, 14 56 70, 8 5 the 40 44 or 3 5 the 15 18 or 1 19, 75 to the 150. Take the sum sigma fi xi. 5 5 5 10, 1 4 7 11 or 8 19 or 3 22 26 35 40, 4 2 6 12 और 4 16 17 18. तो 1800 आपका आ गया. और सिग्मा एफ आई कितना है? 2 और 3 5 8 13 और 14 27 35 38 और 40. This is sigma fi. Now put the values. It is 1800 upon 40. 0 cancel by 0. 4 4 is 16 4 5. So 45 is the mean. Up to this level any problem? ऐसे क्वेश्चन हमने 10th में किए होंगे बड़े सारे मीन निकालने के. ठीक है बेटा. Now we find the deviation. Deviation means mod of xi minus x bar. Now x bar is 45, xi is 15. So it is 15 minus 45, then 25 minus 45, then 35 minus 45, then 45 minus 45, then 55 minus 45, and then 65 minus 45, then 75 minus 45. Here I got 30, from here 20, from here 10, here 0, again here is 10, here is 20 and here is 30. Now find fi into xi minus x bar. It is a deviation of one data. Now we are going to find deviation of two data. 30 to the 60, then 23 the 60, then 10 into 8 80,
0 into 14 0, 10 into 8 80, and 23 जा 60 and 32 जा 60. Find the sum. Sigma fi into xi minus x bar. So this is 60 60 120 120 और 80 200 200 200 कितना आ गया 400. Now the formula of mean deviation about mean. It is given to you sigma fi into xi minus x bar upon sigma fi. This is 400 upon 40. That is 10 is the answer. Is it clear to everybody? हेलो, ये क्लियर हो गया बेटा? अब देखो शॉर्टकट मेथड. आपको ध्यान होगा लास्ट ईयर आपने एक शॉर्टकट मेथड पढ़ा था. तो शॉर्टकट में हम क्या करते हैं, पहले एक एज्यूम मीन मान लेते हैं. याद है आपको? उसको स्टेप डेविएशन मेथड ही बोलते हैं, शॉर्टकट ही बोलते हैं. इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ लो बेटा. एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम? इसमें किसी को प्रॉब्लम बेटा? नहीं. ओके. अब जैसे इसी को ही मुझे अगर शॉर्टकट से करना है, इसी क्वेश्चन को अगर मुझे शॉर्टकट करने से करना है तो क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले एज्यूम मीन मानते हैं. एज्यूम मीन क्या होता है अगर आपको ध्यान हो तो, जैसे एक्स आपने निकाले यहां तक, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम प्रोवाइडेड, थर्ड कॉलम आप निकाल लें. जब थर्ड कॉलम पहुंचेंगे तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 ऑड है, तो बीच में आपके पास ये आ गया, ये 45 एज्यूम मीन मान लेंगे. तो लेट assumed mean be जिसको a से रिप्रेजेंट करते हैं क्या 45 डिग्री.